Assalamu alaikum, students of class 7. How are you, dear students? Students, welcome to another lecture of SST. In the last lecture, as you know, that we started a new chapter related to the environment. That was chapter number 8, in which we learned different things about the world from the start and onwards. On the first page, you learned that there were very few people initially in the world, and then the world started crowding up. There were a lot of problems with the initial world when there were few people, even because of the lack of medical facilities. There were only herbs to treat different diseases. The life expectancy, the average life of the people was about 30 to 35 years, and the more than half of the children born, they died before their fifth birthday, meaning that the infant mortality, as I told you in the last lecture, was very high. Then we learned that the world started to change, crowd started to begin, and the towns were beginning to be overcrowded, overpopulated, because the people were moving from villages towards the town to find better jobs, better facilities. So today in this lecture, we are going to learn the differences, the changes in the world after the 18th century. That is, with the improvement in the life standards, the industrialization, the improvement and the crowding of the cities, and the side effects of increase in population, and the improvement in life because of medical facilities and the scientific researches in our life. So open up page number 41 of your book. We will read about the changes in life. Let us first look at the pictures on this page. Picture when you see is that of the birth rate is higher than the death rate. This picture. When we compare it with the infant mortality rate picture that I showed you in the last lecture, that more than half of the children died before the age of 5. So because of the technical improvement, the researches, the medical advancements, now the children mortality rate, the infant mortality rate has decreased, and more children are able to survive. Now look at this picture. This is the picture of a heap of waste, garbage. Because of the increasing size of population, garbage is also increasing. आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरह जो लैंडफिल साइट्स हैं उनके क्या हालात हैं. लाहौर में भी इवन जो हमारी लैंडफिल साइट है, तो इसमें जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डंप हुआ होता है. And then we have dangerous gases being emitted into the air by different vehicles, factories, industries, and different automobiles also. So now look at this picture in which we can see that the toxic byproducts are running into the river. आपको पता है जब फैक्ट्रीज में प्लास्टिक और इस तरह के कोई हार्मफुल किस्म के एलिमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसके साथ साथ उनका टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. अगर सॉलिड होगा तो वो गार्बेज के हीप्स में ऐड हो जाएगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में होता है उसको रिवर्स में डंप कर दिया जाता है. तो और उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? एक तो हमारी जो मरीन लाइफ होती है, जो एनिमल्स, जितने भी हमारे बेचारे जानवर रहते हैं समंदरों में और दरियाओं में, वो उसका असर लेके उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उनकी डेथ, मर जाते हैं वो, या फिर उसके अलावा वो पॉइजनस हो जाता है उनका मीट, और फिर वो इनडायरेक्टली जब इंसान कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें, तो वो हमारे लिए भी एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से बहुत हार्मफुल है. अच्छा जी, नाउ लेट अस रीड द पैराग्राफ. From the Middle Ages onwards, life changed and developed. More people, though only a minority, began to live in towns. Then from the 18th century, in the industrial world burst upon the societies. जैसे हमने कंपेयर किया था पहले से और उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी के बाद जो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से ह्यूज फैक्ट्रीज, बिल्चिंग आउट ग्रेट क्लाउड्स ऑफ स्मोक. Belching is basically releasing, throwing with pressure. तो ये हमारी environmentally हम बहुत उसमें आने लगे प्रॉब्लम में. Towns and cities grew rapidly. इतनी स्पीड से जो poorer people crowding together to find jobs in industries. Industrial states जो थी, industrial societies जो थी, उनमें जो लोगों ने एकदम
बहुत ज़्यादा रश करके और बहुत ज़्यादा आना शुरू कर दिया सोसाइटीज़ में, टाउन्स में से शिफ्टिंग शुरू कर दी थी इन्होंने। सो इस मोबिलिटी की वजह से जो सिटीज़ थी वो ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा उनके निज़ाम ख़राब हो गए। देयर वर नो एडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम्स, ठीक है जी, कोई उनके लिए हाउसिंग का, सैनिटेशन का, वाटर किसी किस्म का भी सिस्टम अवेलेबल नहीं था। बहुत इश्यूज आने शुरू हो गए थे। बट विद द टाइम हाउएवर थिंग्स बिगैन टू इम्प्रूव, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होने शुरू हो गई, ठीक है। सोसाइटीज़ ने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। टुडे थैंक्स टू गुड वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर एंड मेडिकल एडवांसेस एंड द अदर बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट दैट वी इंजॉय, पीपल लिव ऑन एवरेज ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे डिड अ सेंचुरी अगो। उन्होंने कहा तकरीबन 100 साल पहले जितनी ज़िंदगी एवरेज लाइफ होती थी इंसानों की, उससे अब तकरीबन डबल हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़। अब सोसाइटी स्टेबलाइज हो गई हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स हमारी जो है उन्होंने एक रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी भी कम हो गई है और रिसर्चेज आ जाती हैं जल्दी जल्दी से। ओके जी, लेट अस रीड द रिमेनिंग part that is about the problems that have been caused because of the overpopulation. But have we become too complacent? What is the meaning of complacent? Complacent basically means that हम बहुत मुतमईन हो गए हैं, इत्मीनान में आ गए हैं, कुछ ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, and we are destroying our environment, और हम अपनी environment को destroy करना शुरू हो गए हैं. Many people think so. Now let us read the problems that are given in points. That are the problems caused because of overpopulation. Number 1, every day more huge industrial plants pour out immense amount of polluting smoke. ठीक है जी, हर रोज इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है ना हमारे, वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक हमारी हवा में रिलीज कर रहे हैं. Many industrial processes have dangerous and poisonous byproducts. Byproducts होती हैं साइड प्रोडक्ट्स जो बन रही होती हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डेवलप हो रहा है, दैट इज द बाई प्रोडक्ट, which are often allowed to run into rivers, making the water deadly to fish and plants and also to humans. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरह बेचारे जानवर, फिश और ये सारी चीज़ें तो मरती ही हैं उन टॉक्सिक एलिमेंट्स की वजह से, बट ये इंसानों को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं. Billions of motor vehicles emit toxic gases into the air, especially in the town and cities. हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में क्योंकि मोटर व्हीकल्स ज़्यादा हैं, प्राइवेट बाइक्स और मोटर कार्स बहुत ज़्यादा हैं, वेयर एज इन विलेजेस ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया जाता है. लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आपको रोड्स के हालात पता है कि क्या होता है. हर वक्त जो पीक आवर्स हैं उनमें रोड्स ब्लॉक होती हैं. वो किस वजह से है? एक्सेसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स. अच्छा जी, द लास्ट पॉइंट, the gases from factories and motor vehicles accumulate high up in the atmosphere, forming a blanket which is causing global warming and serious climate changes. अब ये serious climate changes किस तरह हो रही हैं? ये आपका पेज नंबर 44 आई थिंक है, 43, पेज नंबर 43 पर एक इन्होंने डायग्राम दी हुई है जिसको हम अपने ग्लोबल वार्मिंग वाले चैप्टर में टॉपिक में इसको समझेंगे. लेकिन इस वक्त मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको ये बता दूं that जो हमारी layer of air है around the earth which we call atmosphere, तो atmosphere is basically made up of a combination of gases. Okay, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन और इन सारी गैसेस की ना एक स्पेसिफिक परसेंटेज अल्लाह पाक ने सेट की हुई है. And because of the excessive belching of the smoke from factories and automobiles and vehicles and different things into the air, the percentage of carbon dioxide is increasing in this proportion, because of which it is creating a blanket sort of a thing around the earth. और ये ब्लैंकेट जो है ना यहाँ पे बन गया है, और ये ब्लैंकेट इतना थिक है कि इसमें से जो हमारी एक्सेसिव हीट ऑफ द अर्थ है ना, दैट यूज्ड टू रिलीज इनटू द स्पेस, वो अब नहीं हो रही है कि वो अब हमारी अर्थ के अंदर ही रह जाती है और यहाँ पर ये सारी हीट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है. सर्दियाँ हमारी श्रिंक होती जा रही हैं और गर्मियों वाला सीज़न जो है ये बहुत बढ़ता जा रहा है. 8 to 9 months अब हमारी गर्मी रहती है और सर्दी बिल्कुल थोड़ी सी होती है, ठीक है ना, एज यू ऑल आर ऑब्जर्विंग इट. तो ये बहुत बड़ा एक इशू है. दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. So okay ji, that is all for today.
So we'll be continuing with the same topic in the next lecture. Do revise the objectives of this lecture. Okay, Allah Hafiz.